Hello students, welcome back to our YouTube channel Concepts in Science. In this video, we are going to discuss about the unique feature of angiosperms, that is double fertilization. So, when the pollen grain of right type comes on the stigma of the flower, here right type means हमने कहा कि pollen grains of right type come on the stigma of the flower. Right types means pollen grains of the same species. Species उनकी same हो. In that case, if the pollen grain is in two celled stage, अगर pollen grain two celled stage में है, then its germinative cell will divide during the movement through the स्टाइल के थ्रू जो मूवमेंट करेगा पोलन ट्यूब जब बनेगी, एट दैट टाइम द जनरेटिव सेल विल डिवाइड इनटू टू मेल गैमेट्स एंड इफ द पोलन ग्रेन इज थ्री सेल्ड स्टेज, इन दैट केस द पोलन ट्यूब इज जर्मिनेटेड. मींस यहाँ पे कोई पोलन ग्रेन आया, सपोज इसकी एग्जाइम है, एंड देन थ्रू द जर्म पोर पोलन ट्यूब इज फॉर्म्ड एंड दैट पोलन ट्यूब विल मूव थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा style and reached up to the ovary, and then it will enters into the ovule through micropylar end. यहाँ पे इसका ये जो एंड है जहाँ पे इंटेगुमेंट्स एब्सेंट है, दैट इज माइक्रोपाइलर एंड, and it will enter into the embryo sac through one of the synergids. मीन्स ये एक synergid में जाके ओपन होती हैं. And when through this pollen tube, first of all label this here, this is stigma and this one is pollen grain, this is style, and inside the style is pollen tube, and this portion is ovary, and inside the ovary that is ovule. ovule में भी ये हो गया funicle, then hilum, जहाँ पे funicle ovule के साथ ज्वाइन करता है, और ये है इनर इंटेगुमेंट, इनर कवरिंग जो कवर किए हुए हैं, एंड दिस इज द न्यूसेलस, रिजर्व फूड मटेरियल के साथ दिस प्रोवाइड न्यूट्रिशन, एंड दिस वन इज द एम्ब्रियो sac. Development of embryo sac we have discussed in earlier video. For this you have to see that video. Then as and these are antipodals and these are synergids and this is the egg cell and these are polar nuclei. When the pollen tube is germinated, through this pollen tube three nuclei will move. One is nucleus of the vegetative cell, that is tube nucleus, and the tube nucleus is followed by the male pronuclei, or we can say two male pronuclei. Through this pollen tube, three nuclei move up to the embryo sac, and the pollen tube opens into the filiform apparatus of synergids. And here it releases all the three nuclei into the cytoplasm of the synergid. synergid का जो cytoplasm है उसमें ये इसको रिलीज कर देगा. तो यहाँ पे जो ट्यूब न्यूक्लियस है, this is followed by the male pronuclei, and when it enters into the embryo sac, this tube nuclei will degenerate. Means जो tube nucleus का काम था वो था male pronuclei को यहाँ तक लेके आना, इसका पाथ
शो करना, आफ्टर दैट इट गेट डिजनरेट। नाउ इन द synergids, cytoplasm of synergids, two male pronuclei are released. Now one of the male pronuclei move to, ये तो डिजनरेट हो गया, one will move to the egg cell and fuse with the nucleus of the egg cell. एक जो मेल प्रोन्यूक्लियाई है वो एग सेल के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाएगा, एंड दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ एग सेल विद मेल प्रोन्यूक्लियाई, यहाँ पे दो न्यूक्लियस हो गए आपस में फ्यूज, दैट इज कॉल्ड एज सिंगेमी। इस प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, सिंगेमी, एंड दिस सिंगेमी रिजल्ट्स इनटू डिप्लॉइड, क्योंकि यहाँ पे दो हैप्लॉइड सेल्स आपस में फ्यूज हुई हैं, इट विल रिजल्ट इनटू डिप्लॉइड जाइगोट which further develops into embryo of the seed, जहां से सीड का एम्ब्रियो डेवलप होगा। एंड द सेकेंड मेल प्रोन्यूक्लियाई, दो आए थे यहाँ पे, 3 न्यूक्लियाई कम हियर, 2 nucleus will degenerate, then 1 male pronuclei fuse with the egg cell and forms the zygote, and the another male pronuclei move to the polar nuclei in the center, जो सेंटर में दो न्यूक्लियस लोकेटेड थे उनके पास जाएगा एंड फ्यूज विद द पोलर न्यूक्लियाई। तो ऑलरेडी 2 न्यूक्लियाई थे, और along with this third male pronuclei fuses with this. Since here 3 nuclei involved in this fusion, यहाँ पे 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हुए हैं, मेल प्रोन्यूक्लियाई और 2 पोलर न्यूक्लियाई, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन, एंड दिस ट्रिपल फ्यूजन रिजल्ट्स इनटू, अब जैसे ही इनका फ्यूजन होगा यहाँ पे जो सेल बनेगा एक सिंगल सेल, उसको हम कहेंगे PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, एंड लेटर ऑन दिस सेल जिसके अंदर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, इस सेल को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब ये सेल क्या बन गई, PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, which will develops into the endosperm, and this endosperm will provide nutrition to the developing embryo. जो developing embryo है उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, जो एंडोस्पर्म है वहीं से मिलेगा। Since both of these syngamy and triple fusion, both of these processes are occurring in the same embryo sac simultaneously, मीन्स यहाँ पे एक ही एम्ब्रियो सेक में सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों होते हैं साथ साथ, इसलिए इस प्रोसेस को हम, होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, डबल fertilization, and this double fertilization is the characteristic features of angiosperms only. ये सिर्फ और सिर्फ आपको किसमें मिलेगा, angiosperms में, ठीक है। Now after this double fertilization, this PEC will develop into the embryo sac, and this syngamy से जो zygote बना, zygote will develop into the embryo, then this endosperm will provide, firstly a small amount of endosperm is formed, then the division in zygote will start and embryo is formed, and then this endosperm will provide nutrition to the developing embryo. When this matures, then this embryo, this ovule will develop into the, ये जो ovule है, this whole structure, this ovule will develop into the seed, ovule से क्या बनेगा, seed, and this ovary will develop into fruit, और जो ovary है that will ripe into the fruit, उससे fruit बन जाएगा, और जो ovule है वो ripe होके क्या बनाएगा, seed बनाएगा। अब जो seed में ये जो ovule है उसके कौन कौन से पार्ट, seed का कौन सा पार्ट बनाएंगे, अगर इसमें देखें हम, ये है outer integument, this outer integument of the ovule forms seed coat, ये बाहर की जो कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग, ये उसको बनाएगा,
and this inner integument will form the inner transparent covering of the seed. जो हार्ड सीड कोट है उसके नीचे एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग भी होती है which can be separated from the seed coat or cannot be separated from this. तो जो इनर इंटेगमेंट है it will develop into the transparent membrane or transparent covering of the seed, and then this embryo will form the embryo of the seed, and the rest of the region will form the cotyledons of the seed. अब यहाँ पे जो सीड जो बनता है, सीड में हो सकता है कि 2 कोटिलेडन बने और सिंगल कोटिलेडन हो. तो अगर यहाँ पे सिंगल है कोटिलेडन्स तो उसको हम कहेंगे मोनोकॉट, या और अगर 2 कोटिलेडन्स हैं तो हम कहेंगे उसको डाइकॉट सीड. ठीक है. और हो सकता है इसका जो एंडोस्पर्म है, इफ दिस एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ दिस एम्ब्रियो, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो मे बी दिस एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड. इन दैट केस if this endosperm is completely consumed, then the seed is called as non-albuminous, and if some of the endosperm remains even after the maturation of the embryo, then that seed is called as albuminous seed. तो हमारे जो मोस्टली मोनोकोट्स हैं ये एल्ब्यूमिनस सीड्स हैं और डाइकोट्स हैं ये नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स हैं. थैंक यू.